पाकिस्तान में हिंगलज माता मंदिर को तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद पाकिस्तान की लोकल अथॉरिटी ने हिंगलज माता मंदिर को तोड़ दिया है। बट आखिर क्यों? तो इसका रीजन यह दिया गया है कि उन्हें टेंपल की जगह एक रेस्टोरेंट बनाना है। 1400 साल पुराने इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हर साल यहां हिंगलज यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा हिंदू शामिल होते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में आजादी के समय माइनॉरिटीज के 428 फेमस रिलीजियस प्लेसेस थे। इनमें से 96% से ज्यादा प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। करंटली पाकिस्तान के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास हिंदू टेंपल्स की 1,35,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में 18% के अराउंड माइनॉरिटीज थी, जो अब 1% से भी कम रह गई हैं। जहां इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छे से ग्रो कर रही है, वहीं पाकिस्तान में ऐसे हिंदू मंदिरों को तोड़ देना और हिंदू पॉपुलेशन को कम होना, इसका क्या कारण है? नाम के शब्द का मतलब क्या है? हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ये वही है, बट ये एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा बड़ा है दोस्तों। बलूचिस्तान का कंसेप्ट समझना है तो आप कुर्दिस्तान का कंसेप्ट समझ लो। कुर्द एथनिसिटी के लोग जिन जिन इलाकों में रहते हैं, वो उन इलाकों को जोड़ के एक बड़ी कंट्री कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तो टर्की में जो कुर्द का इलाका है, इराक में है, ईरान में है, कुछ हद तक सीरिया आर्मीनिया में, उसको जोड़ के पूरी कंट्री बना दो कुर्दिस्तान, जहां पे कुर्द रहते हैं। उसी प्रकार से बलोक लोग जहां जहां पे भी हिस्टोरिकली रहते हैं, उस इलाके को जोड़ के बलूचिस्तान बना लो। तो जो पाकिस्तान का 44% लैंड मास है बलूचिस्तान का, वो तो इसमें आता ही आता है। साथ साथ ईरान की जो साउथ ईस्टर्न प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान की, वो भी इसमें आता है। और जो साउदर्न अफगानिस्तान का नीमरोज, हेलमंड और कांदाहार प्रोविंस है, वो भी इस पर्टिकुलर बलूचिस्तान के इलाके में आता है। तो इन 3 कंट्रीज के इन इलाके को जोड़ दो तो पूरा का पूरा बलूचिस्तान बनता है। इससे पहले बलोक एथनिसिटी के पॉलिटिशियंस कई बार बोल चुके हैं कि हमें एक ऐसा मूवमेंट चलाना चाहिए जहां पे इन तीनों इलाकों को जोड़ के एक अलग से कंट्री बना दो। और इनके लिए एक एडवांटेज ये भी होगा कि अगर ये कंट्री बनती तो उसके पास सी एक्सेस भी होगा। बट अपने आप में बहुत मुश्किल है होना। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान में एक्टिव है, ईरान अफगानिस्तान में उतना एक्टिव नहीं। पार्टीशन के वक्त नागरिकों के पास 2 ऑप्शंस थे, अपनी मर्जी से किसी भी एक देश की नागरिकता चुनना या खुद ऑटोनॉमस रहना। तब बलूचिस्तान के एक हिस्से खानते ऑफ कलात ने अपने लिए आजादी चुनी, मगर पाकिस्तान ने 1948 पर इस पर अपना कब्जा कर लिया। तभी से बलूची अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज भी जारी है। बलूचिस्तान की पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से बॉर्डर लगती है। ये पाकिस्तान के लिए गेटवे टू मिडिल ईस्ट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहाँ से गुजरता है। पाकिस्तान के टोटल गैस प्रोडक्शन का 40% केवल यहाँ से ही प्रोड्यूस होता है। बावजूद इसके पाकिस्तान यहाँ मिलिट्री कैंपेन चलाता है, किडनैपिंग, अनलॉफुल किलिंग, फेक एनकाउंटर्स करता है। सरकारी नौकरियों में बलूचियों को जगह नहीं मिलती। ऐसे में बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान जैसे कई मिलिटेंट्स ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन क्या बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना ग्लोबल ट्रेड के लिए बेनिफिशियल होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं और डाउनलोड करें IAS लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स हैं। वहीं पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस की मेजर डिमांड भी बलूचिस्तान ही पूरा करता है। पर हाईली ऑयल एंड मिनरल रिच ये प्रोविंस की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी फेस कर रही है। बलूचिस्तान का मिनरल रिच होने के बाद भी अंडर डेवलप्ड रहने का मेन रीजन है पाकिस्तानी आर्मी। 1947 में हुए पार्टीशन के समय से बलूचिस्तान इंडिया का हिस्सा बनना चाह 1948 में पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान पर अटैक कर उसे कब्जे में कर लिया, जिसके बाद मजबूरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ा। लोगों और पाकिस्तानी आर्मी के बीच कंटिन्यूसली हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसी कन्फ्लिक्ट के चलते रिसेंटली 53 लोगों को अपनी जान सुसाइड बॉम्बिंग अटैक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसके बाद बलूचिस्तान प्रोविंस में टेंशन और इंक्रीज हो गई है। Focus at this hour, a prominent Baloch activist has been found dead in the Canadian city of Toronto 2 days after going missing. Karima Baloch's suspicious death has now brought back the focus on Pakistan's persecution of Baloch minorities. Baloch arrived in Canada as a refugee in 2015 after escaping an attack from the Pakistan army. She continued her activism from Canada and accused the Pakistani government of cracking down on Baloch activists and taking away the natural resources of the strategically important province. Baloch also raised the issue at the United Nations. The riots group accused Pakistani security forces of carrying out extrajudicial killings in the rest of Balochistan province. Karima Baloch was among thousands of activists who were compelled to seek asylum in foreign nations in order to evade persecution at home. Meanwhile, exiled Pakistani activist Gulala Islam said that Baloch activists continue to be hounded even in foreign countries. Journalist Gul Bukhari, who moved to the UK from Pakistan, also raised suspicions over Karima Baloch's death, saying that it was not the first time that a Baloch activist was found dead in a foreign nation. WION World is One is now available in your country. Download the app now and get all the news updates on the move.
They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed, and I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears, and I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong
that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within.